Hello and warm welcome to everyone. Today we are here to discuss Nifty's, specifically the target for the calendar year 2025. So we have to discuss Nifty's target, but it is based purely on the fundamentals, and it is also, I'm going to say, along with few reasons on which we have to focus. I'm going to say along with the target we need to focus, or we need to understand how we can achieve these targets and what positive developments could help the market to move toward these targets. Your focus should be on the developments. So, the developments that we are expecting, so on that you have to focus. And if they are aligned with our broader expectations, then the market can reach these levels easily. So, for the next 20 25 minutes, stay connected with us. The reason is because, see, what is important, now there are a lot of uncertainties. And because of uncertainties, it is very difficult to predict that till what levels, till where the market can move from here. And based on fundamentals, we can find out like how the market can move from here to the next level. If there are any developments, then we have to cover those developments. We have to focus on them, we have to analyze them, and based on those analysis, we can find out that whether we can move toward those levels or not. These developments helps in terms of like enhancing earnings of the company. And see, as a company, as a research analyst, always what we do, we always give more weightage to the earnings of companies, of corporates. अगर आप अर्निंग्स के ऊपर फोकस करोगे तो अर्निंग्स के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकोगे कि कितने अर्निंग्स आ सकते हैं आने वाले साल में, और वो अर्निंग्स आने के लिए कौन से ट्रिगर्स होने चाहिए। ये सभी ट्रिगर्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे जितने भी पॉसिबल है, सी देखिए, जो अनफोर्सिन इवेंट है, जो अननोन इवेंट्स है, उसके ऊपर तो हम कुछ बात कर ही नहीं सकते, और वो कैसे भी आ सकते हैं उसे हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन जितने इवेंट्स हम यहाँ से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में हम मेजर कर सकते हैं, हम उसे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन दैट उसका एनालिसिस करके हम देखेंगे कि ये जो इवेंट्स आएंगे आने वाले, वो पॉजिटिव्स होंगे कि नेगेटिव्स होंगे मार्केट के लिए। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारी जो अर्निंग है कंपनी की वो कैसी रहेगी, और वो अर्निंग्स के बेसिस पे हम उसे मल्टीपल्स देने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन मल्टीपल्स हमें पता चलेगा कि लाइकली टारगेट्स कौन से हो सकते हैं। ओके, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड let me share the overall this particular presentation file with all of you. Just a minute. Yeah. Is it visible? I'm sure it should be. Just a minute. दिख रहा है क्या? So we'll start with market outlook for the calendar year 2025, and it is purely, I'm going to say, we are like going to focus more on the equity very first. We also need to cover on few other aspects like debt, commodities, currency, but all these parts today we are not going to cover. We are going to cover just the equity section, as we are going to focus more on the Nifty's target for 2025.
So very first, our Nifty target on for the calendar year 2025, I'm going to say till the end of December 2025, is that we are expecting 26,100, which is the best case target. यानी इतना target तो हम expect कर ही रहे हैं निफ्टी के ऊपर. In the bull case scenario, we can even see the levels of 28,800, and in case if things fails to perform as per our expectations, then in that case the Nifty may even come down to the levels of 23,300. So the broader range for the Nifty should be 28,800 and 23,300, but from here the market can reach to the levels of 26,100, which is, we can say, decent upside from current levels, as already the market is under a lot of uncertainties. There are a number of things which are going to impact on the market, but at the same time, the domestic reasons on which we are going to discuss now, I think those reasons can help the market to lift from current levels to the next levels of 26,100. Now, what are those reasons? So, for those reasons, very first we have to consider government and private capex is expected to revive. I will explain all these slides very quickly in detail manner, in briefly in the next slide. But just for the highlighters, I'm going to say just to uh, uh, summarize all these things, we need to focus on few highlighting pointers, and on that, very first is government and private capex is expected to revive. In Q3 FY25, estimated wedding of 50 lakhs couples to spur consumption and growth. So festivals and weddings always helps the economy in the second half of the calendar of the financial year, and that is what we can say. It's a big trigger for the earnings to grow. Above average reservoir level can boost Rabi crop and control inflation. So on that I will come. India has high return on equity. On that I will spend some more time because it is something which is very essential to know that how like our high return on equity and low risk can help our markets to do well. FI's outflows are large but not substantial and favorable demographic. So very quickly, uh, we have to go through with all these slides, but all these slides are very, very important. So just pay attention. So festivals plus wedding plus government spending. If we consider Diwali 2024, then in that we saw e-commerce sales surge by 49%, which is something really decent. Wedding rush, where 4.8 million couples to spark 5.9 trillion economic surge. If we consider these numbers with the last year's number, then that 4.89 million couples, it was around like 3.5 million weddings. And the economic surge that we are going to see is 5.9 trillion, but in the previous, it was close to 4.25. That means this surge is something will help corporates to do well in the second half. Also, if we consider the government spending, then in that you can very clearly see that budgeted capex for FY25 was around 11.11 trillion. Out of that, in the first half, government spent only 4.15 trillion rupees, and now they have the balance of 6.9 trillion rupees. If that is in the hand, and we have next, let's say, 4 months, then we have to spend, I'm to say the government have to spend 1.16 trillion per month. See, which is not practically possible, but a government may take some aggressive steps to spend not 1.16 but little more than 7.70 trillion, 0.70 trillion uh, per month, and that will help again for, let's say, companies like maybe sectors like capital goods and infra and few other sectors which are related to the infrastructure, capital goods and construction. So this is something which will again
help to revive on the GDP on the अर्निंग्स फ्रंट. एंड अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है कि ये जो कैपेक्स, अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट अगर आके कैपेक्स करती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का फोकस है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, इसी वजह से वो इतना स्पेंड कर सकती है. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली कोई ना कोई रिफॉर्म्स ला रही है और पॉलिसीज ला रही है और जिसकी वजह से हमें ये स्पेंडिंग देखने मिलता है. तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है फॉर एफआईएस टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. और अपने पास ये अच्छा खासा एक, मैं कहूँगा कि ट्रिगर है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे अर्निंग्स बढ़ सकते हैं. बट इतना ही नहीं, अगर आप प्राइवेट कैपेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि ऑलरेडी ऑयल एंड गैस कंपनीज, पावर, टेलीकॉम, इन्होंने अपना अपना कैपेक्स अनाउंस किया है और ये अपने कैपेक्स को लेके आने वाले हैं. उनका ऑलरेडी स्पेंडिंग चल रहा है, स्पेंडिंग और बढ़ेगा. और अगर ये कैपेक्स एज इट इज रहा, जैसे एक्सपेक्टेड है, अगर इसी लाइन पे चलते रहा तो देन वी आर गोइंग टू सी फर्दर मोर सपोर्ट टू द इकोनॉमी. Then, if we consider the production of Kharif and Rabi, then that is also something which is going to support because this time the monsoon was better than expectations. Kharif production to grow nearly 5.7% and above average reservoir level can help Rabi to boost the overall production. If that is the case, then the inflation will come down. And in the previous month, in the month of October, we saw higher inflation, and it was mainly because of the higher vegetable prices. But in the month of November, we saw some cool off in that vegetable prices, and that is why today, when the inflation numbers are going to get released at 5:30 p.m., I think that inflation to come down a little bit, to moderate a little bit, because the vegetable prices have started cooling off and further in the coming month. So we are expecting eventually inflation to come down, and it is also something which is always positive in terms of domestic macro. Then India has high return on equity. This particular slide is having a lot of relevance to understand. Why? Because if you see the this particular slide, then in that you can see US, USA, India, Mexico, as well as China and Brazil. All these major countries, they have, I mean to say, the return on equity, which is something uh, commands valuation for that particular country. In that, if you see, then US is having 15% return on equity, which is highest in all these top five countries. India is the second best, and India is having return on equity of 14%, which is the 10 years average. But if we consider the average of last 3 years, then it is more than 20%, which is something really positive. Because जितना आरओई ऊपर होगा उतना हमें हायर वैल्यूएशन मिलेगा, और इसी वजह से हमने पूरे पिछले साल में जो हायर वैल्यूएशन देखा था वो इसी वजह से देखा था, क्योंकि अपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी जो हमारे कॉर्पोरेट्स की थी वो काफी हाई लेवल्स पे थी. अगेन ये जो ग्रे बार आप देख रहे हो, ये ग्रे बार क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये ग्रे बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 34%, आई मीन टू से, जितने भी टोटल लिस्टेड कंपनीज है एक्सचेंज में, उसमें से 34%, आई मीन टू से 1/3 कंपनीज का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज मोर देन 14%. And in US, if you see, then for nearly 40% companies having ROE of nearly 15%. But if we consider other, let's say, Asian countries or maybe emerging countries, then in that Mexico, China, Brazil, they all have 13 to 12% sort of return on equity, but only 20% of their listed companies having this ROE. And that's the reason we can attract fund flows or FI flows in the uh, coming, let's say, few months. Right now, the currency is struggling. Our currency is around 84.85.
the dollar index is going up, and it is all happening because of the lot of uncertainties in the world. The US is announcing one or another statement, and that is something impacting to the currency. They have announced solid growth for their country, and the inflation is moving. In the US, the inflation is going up gradually. So whenever the inflation is going up gradually, and in that, if they are thinking to cut the rate, that means that this economy is certainly having lot of potential to do well in the long run. So if that's the case, then dollar is going to remain strong. And if dollar is going to remain strong, then our currency vis-a-vis going to depreciate. But if we consider our currency strain with other emerging markets, then we are relatively better. And that's the reason eventually, maybe after the oath of Mr. Trump and his agenda, we will come to know that whether it is positive for India or not. And based on that, also we can take the next call on the market. But broadly, I am of the view that it is not going to impact the market severely. Yes, there could be some moderate impact, but for that, our corporates are always like prepared for that. FI's activity and like since last 2 months, if we see, then there is like a lot of talk on the street. बहुत सारी चर्चाएं इसी के ऊपर है कि एफआईएस ने इतना सारा माल बेचा क्यों और इतना सारा माल बेचने के बाद अब इंडिया का होगा क्या. बट नॉट टू वरी, अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कई सारे ऐसे इवेंट्स अटेंड किए, कई सारे हमने इवेंट्स फेस किए हैं. और वो जब हमने इवेंट्स फेस किए, दैट टाइम जो आउटफ्लो था यहाँ से, वो क्लोज टू $10 बिलियन के करीब का था. $10 बिलियन इस बार अगर आप देखें तो दैट इज $12.9 बिलियन का आउटफ्लो बना हुआ है. 12.9 बिलियन के डॉलर्स में अगर आप देखें तो जो डैमेज हुआ है वो डैमेज इज जस्ट 10%. और ये 10% का ही डैमेज क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके पहले का ही अगर आप इवेंट देखेंगे, यानी 2021 का अगर आप इवेंट देखते हो, दैट इज जियोपॉलिटिकल वरीज, अगर आप उस वक्त देखेंगे तो उस वक्त का आउटफ्लो कितना था? $34.9 बिलियन, ह्यूज, हाईएस्ट. और अगर इसके पहले के जो बड़े इवेंट्स है, जैसे कि कोविड का इवेंट है, उस वक्त $10.6 बिलियन का आउटफ्लो था. और उसके पहले 2008 जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, दैट टाइम इफ यू सी, then the outflow was around $15.4 billion. And that time the correction was more than 20%. But this time the correction was close to 10%. Why? Because the important part is that only 0.3% of the average market cap of the country is what? $12.9 billion. It is the only 0.3% of the average market cap. And if you see, लास्ट 2 साल में कई सारे ऐसे कंपनीज लिस्ट हुए हैं और जो मार्केट का बेस है वो काफी बढ़ गया है. साथ ही साथ मार्केट जो 12,000 के करीब था वो 24,000 के करीब आ चुका है. तो मार्केट का बेस इंप्रूव हो चुका है और उस बेस के कंसिडरेशन में अगर आप आउटफ्लो देखेंगे तो दैट आउटफ्लो इज वेरी लेस. एंड दैट इज वाई we are of the view that 12.9 billion is large, but it is not substantial. So that way we have to see the FI's activity, and based on that we can design our strategy. Now, if we see the FI's domestic flows, then SIP flows are consistently increasing, and it was around, let's say, 20,000 crore in the month of April 2024. And now, by the end of this October, we have reached the levels of 25,000 crores per month. और ये numbers अगर बढ़ेंगे नहीं तो एटलीस्ट बड़े कम होने के चांसेस कम है. एंड दैट इज वाई we are bullish in terms of like the domestic support. And this time also, when there was like outflow of $10 billion, $12 billion, we saw equal amount of infusion from domestic institutions. और ये जो पैसा आया है डोमेस्टिक लेवल से, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी सेलिंग था वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे एब्जॉर्ब हुआ है. और अगर वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसमें से हमें हमारा जो डिपेंडेंसी है जो एफआई के ऊपर था अभी वो कम हो गया है.
और जो हमारा अभी डिपेंडेंसी है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बढ़ते जा रहा है। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो अपने कंट्री के लिए होता है, वो हॉट मनी नहीं होता है। दे बाय विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट एटलीस्ट 12 to 24 months, उनका बड़ा व्यू होता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम एफ के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो एफ ऑलवेज मैक्रोस को ट्रैक करते हैं, उनके खुद की करेंसी को ट्रैक करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो सकती है विज़िवी जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर क्या होता है, उस केस में उन्हें जो उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें से उन्हें एग्जिट करना पड़ता है। एंड दैट्स द रीजन वी सॉ good amount of sell off in past several event, but this time this is not the case. This time our domestic institutions, our retail investors are there to support the market, and that is why we saw limited sell off in the market. And when the market is rebounding from lower levels, now we are quickly at 24,500. Still we are far away from 26,100, but I'm of the view that markets are going to consolidate and they are going to find support if there is any further more correction because of any reason. Now, if we consider the demographic situation of the country, then India is having favorable demographics. अगर आप देखें तो जो लार्ज पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स का है, और इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो कंजम्पशन बढ़ता है, एंड इफ देर इज एन इंक्रीज इन कंजम्पशन, देन इट हेल्प्स to enhance corporates earning, and eventually it helps to increase investments. And if the investments are going to increase, then it helps economy to do well. So broadly all these things are going to like support one by one if there are any uh, unforeseen events in the market. The important part, the most important part on which every country focus and every central bank focus is inflation. And if we consider the India's inflation as compared to global markets, then we are at much better levels and at better state. If we consider the inflation for, let's say, for the by the end of 2025, then it should be around 4.9%. In the previous month it was around 5.4%, and we are expecting it to moderate little bit, but gradually we are expecting inflation to come down, and by the end of 2026 we are expecting inflation to fall to the levels of 4.20. अगर ये इन्फ्लेशन ऐसे ही घटते रहा और जो अपने जीडीपी के नंबर्स थोड़े से वीक हुए थे, करेक्ट, प्रीवियस मंथ में जो जीडीपी के नंबर्स आए थे वो काफी वीक थे, और इसी वजह से हमने मार्केट में एक थोड़ा एडिशनल सेल ऑफ भी देखा था। लेकिन अगर इस जीडीपी को रिवाइव करना है और अगर इन्फ्लेशन भी कम होने वाला है, तो देन देयर विल बी द केस ऑफ इंटरेस्ट रेट कट, जो पॉसिबिलिटी है इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। ये जो इस बार की जो आरबीआई मीट थी उसमें हमने सीआरआर कट देखा, और व्हेनेवर देयर इज अ सीआरआर कट इट इंक्रीजेस लिक्विडिटी फॉर द बैंक्स, और स्पेशली ऐसे केस में पीएसयू बैंक्स को बेनिफिट होता है। और इसी वजह से हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी रैली देखी। अब यहाँ से जो ट्रेंड बनेगा वो बनेगा मे बी रेट कट का, और अगर ये रेट कट का सिलसिला अगर बनता है तो देन बाय द एंड ऑफ 2025 वी आर एक्सपेक्टिंग आरबीआई टू कट 75 बेसिस पॉइंट। अगर ये सब होने वाला है तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, कमोडिटीज है, राइट, इन सब के लिए एक एडिशनल बेनिफिट होता है, बिकॉज उनका जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज दीज आर ऑल लाइक कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो ये दिखा रहा है कि आने वाले सालों में हम इन्फ्लेशन को और कम होते हुए देखेंगे। नाउ द फाइनल स्लाइड, और यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। वी आर cautiously optimistic on India. Why? Because in the previous year we saw extraordinary returns, और वो टाइप के रिटर्न यानी कि 34-35% sort of return we cannot expect for the coming year. I mean to say the calendar year 2025. Yes, possible है कि कुछ और बड़े डेवलपमेंट्स आते हैं जिसे हम राइट नाउ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं या तो फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आते हैं तो मार्केट्स कैन मूव टू दी extreme levels also.
बट अगर हम इस मार्केट को थोड़ा सा एक किसी एक व्यू के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि इस मार्केट में अभी भी काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स. सो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस में आफ्टर ट्रम्प what is going to happen, uh, whether he is going to be more and more strict here on the tariff, whether he is going to give more softs to his own country, which is going to impact other countries. ये सब हमें कंसिडर करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एट द सेम टाइम हमें लगता है कि जो करेंसी का ट्रेंड है वो हमें देखना पड़ेगा. तो ये जो हेडविंड्स है इसी वजह से हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा कॉशियसली रहना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप डोमेस्टिक मैक्रोस को देखेंगे तो वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है. और इसी वजह से हमें लगता है कि हमें इस मार्केट में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है. और कुछ मैक्रोस की बात करते हैं वेरी क्विकली. अगर हम देखें तो इस बार के जो हमारे टारगेट्स है वो तो 26,100 के हैं, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर जो हमने टारगेट्स रखे थे वो रखे थे 21,865 के और बुल के टारगेट से 24,295 के. सो इफ वी कंसीडर द ईपीएस ऑफ FY26 वन ईयर फॉरवर्ड अर्निंग, प्रीवियस ईयर में हम लोग वन ईयर फॉरवर्ड के अर्निंग्स के बेसिस पे हमने जो हमारे टारगेट्स रखे थे वो रखे थे 24,295. और अगर आप देखें तो अभी का जो मार्केट है वो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो वो 26,000 जा रहा है या तो 23,000 जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली हम ब्रॉडर जो मार्केट की एक्टिविटी देख रहे हैं दैट इज क्लोज टू 24,000 लेवल्स. सो दैट मीन्स फंडामेंटली market, I mean to say the market is giving weightage to the fundamentals of the corporates or I can say companies. And uh, both these targets market achieved. Now, if we focus on few macros, then central government's development agenda, I mean to say जो भी कैपेक्स करना है उसके ऊपर तो फोकस रहेगा ही. और अभी इलेक्शंस भी हो चुके हैं तो जो भी इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस हुए जनरल इलेक्शंस हुए उसका जो एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा that will help government to increase their spending. If we consider crude prices, which is the biggest component of import bill, then that is also we are expecting to remain somewhere close to $70 per barrel. Okay. Also, if we consider the forex reserve, because after this outflow, now a lot of investors they are worried, but it is still at decent level or we can say at record highs. Why? Because our forex reserve is at now $657 billion. It was around $705 billion. But how we see the this particular forex reserve, we have to see that whether we can cover the entire import of next 12 months. And yes, that we can cover easily with this particular forex. So it is at record high and we need not have to worry about the outflow that we have seen in the last 2 months. Now, if we consider the GDP growth, then it was like subdued because of the Q2 earnings and rise in the inflation and all. But if we consider the GDP for next, let's say 2 quarters or by the end of calendar year 2025, then we are expecting GDP growth of 6.1% in FY25 and 6.4% in FY26 estimates. So अगर आप उसके अर्निंग्स के साथ अगर आप देखते हैं एंड इफ वी कंसिडर फ्यू मेजर फैक्टर्स, देन आई एम ऑफ द व्यू दैट जो जीडीपी हमने 5.4% का देखा था वो हमें लगता है कि इम्प्रूव होते हुए 6.1% या 6.4% हो सकता है. आरबीआई का टारगेट इज ऑल्सो समवेयर क्लोज टू 6.5%. करंट अकाउंट डेफिसिट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बजट के टाइम हम इसे देखते हैं, लेकिन दिस टाइम इफ वी सी देन आवर export is also contributing, and whenever there is like contribution from export it helps current account deficit to remain in control. Fiscal consolidation, I mean to say fiscal deficit likely to stand at 4.6% or lower, which is again positive, and based on that we can expect inflows. Stable currency, yes, right now we are seeing depreciation. Currency is at 84.88, 84.85, which is the lowest point. It is depreciating. But if we consider our currency with other emerging markets or other countries of the world as compared to dollar, then we are relatively better. We expect our profit, I mean to say Nifty's profit,
टू ग्रो 4.9% इन FY25, यानी ये जो कैलेंडर ईयर अभी खत्म होगा FY25 में, वहां पे 4.9% का हमें जंप एक्सपेक्टेड है, विच इज अराउंड 1036 ऑलरेडी। Q2 FY25 तक हमने 500 का EPS कर लिया है, नाउ 550 540 का EPS करना बाकी है, and with this reason I think we can achieve those targets. But if we consider the earnings EPS of FY26, then there we are expecting 16% growth, and ऑलरेडी द मार्केट हैज डिस्काउंटेड टू दैट। तो जो हमारी जो ऊपर के जो सबसे इस स्लाइड के जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उसके जो टारगेट्स आए थे वो बेस्ड ऑन दिस ईपीएस थे। और अगर आप 1206 को इंटू 22 टाइम्स करेंगे तो इट कम्स टू 24,295। और अगर आप 20 टाइम्स करोगे, 20 टाइम्स आई मीन टू से आपको 1206 को मल्टीप्लाई करना है विद 20। इफ यू डू दैट तो आपको मिलेगा बेस केस टारगेट which was around 21,865। बट अगर हम नेक्स्ट ईयर के, यानी कि ये जो कैलेंडर ईयर है, अगर हमें उसे प्रेडिक्ट करना है तो हमें लगता है कि, या फोरकास्ट करना है, तो हमें 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग को यूज करना पड़ेगा। और 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग यानी FY27 के अर्निंग्स के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और उसे मल्टीपल्स देने पड़ेंगे। तो अगर हम FY27 के EPS को देखेंगे तो वो जो हम EPS अराइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1372 की। और अगर 1372 की EPS है और अगर हम उसे 21 टाइम्स देते हैं, बिकॉज मार्केट्स में अनसर्टनिटीज है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 22 टाइम्स अगर हम 21 टाइम्स देते हैं, देन ऑल्सो वी कैन रीच टू द लेवल्स ऑफ 28,800। बट अगर हम 19 टाइम्स देते हैं, ओनली 19 टाइम्स, प्रीवियस ईयर में हमने 20 टाइम्स दिया था, इस बार अगर हम 19 टाइम्स देते हैं टू द EPS, देन इट कम्स टू द लेवल्स ऑफ 26,100। बट अगर हम इसे 17 टाइम्स देते हैं, अगर बेयर केस सिनेरियो बनता है, तो शायद हम 23,300 के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर आप इस पूरे साल में या तो पिछले 2-3 महीने में जो मार्केट में हुआ है, अगर उसके हाई लोस को भी देखेंगे तो दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू द गिवन लेवल्स ऑफ 26,300 एंड 23,300। यानी ब्रॉडली आई एम ऑफ द व्यू दैट ये जो फंडामेंटल्स है वो वर्केबल है, और जो भी ट्रिगर्स अभी आने वाले दिनों में है, अगर जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे अगर इन ट्रिगर्स को अगर हम देखते हैं तो मुझे, और आते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम इन लेवल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस मार्केट में अगर हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है तो हमें इस मार्केट में मोर एंड मोर स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी बड़ी हो सकती है। एंड दैट इज वाई हमें लगता है कि अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी को फोकस करते हैं तो कौन से सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है। हमें देखिए, यहाँ पे अगर हम 26,100 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 to 6% का ही हमें अपसाइड नजर आता है। लेकिन अगर जितनी भी जो भी रीजन हमने रखे हैं, अगर हम इसे बीट होते हुए देखते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बीट होते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम बुल के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें लगता है कि ऑलवेज हमें बेस केस के ऊपर रखना है और हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखना है, तो हमें 26,100 के टारगेट के साथ इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है या तो ट्रेड करना है। और कहाँ पे हमें फोकस करना है, तो हमारा फोकस होना चाहिए BFSI पे, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और BFSI में स्पेशली लार्ज बैंक्स के ऊपर फोकस करें, और साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ एक जायंट NBFCs पे भी आप फोकस कर सकते हो। और इसके अलावा कोई सेक्टर अगर बन सकता है तो वो है IT में हमें लगता है कि US इकोनॉमी जैसे स्ट्रांग होते जा रही है, तो US के ब्रॉडर मार्केट को इसका बेनिफिट मिलेगा। ब्रॉडर मार्केट को बेनिफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर बढ़ती है तो हमारे इधर के जो IT कंपनीज होते हैं उन्हें काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है। एंड दैट इज वाई वी आर स्पेसिफिकली बुलिश ऑन BFSI अलॉन्ग विद IT। रियल एस्टेट स्पेस में भी हमें लगता है कि रियल्टी स्पेस में हमें लगता है कि और भी डिमांड जनरेट होगा, प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होते जा रहा है, और ये जितने भी बड़े रियल एस्टेट कंपनीज है वहाँ पे जो उनकी इन्वेंट्री है वो लगातार कम होती जा रही है। सो इफ इट इज आई एम टू से दैट द इन्वेंट्री इज कमिंग डाउन, दैट मीन्स इट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। अलॉन्ग विद दैट हमें लगता है कि फार्मा के वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। हमें कुछ एक सेक्टर ऐसे भी चाहिए कि जो डिफेंसिव होते हैं, तो हमें लगता है कि फार्मा एज ए डिफेंसिव सेक्टर हमें हमारे हाथ में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिसेंट अपसाइड नजर आती है। हेल्थ केयर, आई मीन टू से हॉस्पिटल स्टॉक्स, यहाँ पे भी हमें फोकस रखना है, बिकॉज इनके जो नंबर्स आए थे
वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर भी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो ब्रॉडली मैंने आपको सभी जितने भी बड़े बड़े एस्पेक्ट थे उन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी टच अप ऑन कर लिया है, और हमें लगता है कि हमें इस मार्केट में कॉन्फिडेंट रहना है। इस मार्केट में हमें मैं कहूँगा कि काफ़ी होपफुल भी रहना है, क्योंकि जो मार्केट की यानी कि जो इंडियन मार्केट की जो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है वो स्ट्रक्चरल है। यहाँ से हमें मार्केट को बियॉन्ड 2-3 साल देखना है, और तभी जाके आपके इन्वेस्टमेंट्स बनेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है तो आप एसआईपी का रूट फॉलो कीजिए, लेकिन आप इस मार्केट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे तभी जाके आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये जो भी रीजंस है, जो भी निगेटिव्स मार्केट में आते हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन होता है, वो सभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग। आपके जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को वो और बेहतर करेगी। सो द स्ट्रेटेजी शुड बी टू बाय करंट at current levels selective stocks, but at the same time if there is any correction then buy more, add more to your investments and stay confident in this market. courageous रहिए, confident रहिए, तभी जाके आपको इस मार्केट में रिटर्न्स देखने मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर आज के वेबिनार को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, कीपिंग पेशेंस एंड focusing on whatever the details that we have given today. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.